Morning students, बच्चा today is 10th of December 2020. As you all are knowing that we are doing your chapter number 15 statistics. In previous class I have already told you about how to find out standard deviation for discrete series and then for individual series. Today we will discuss how to find out standard deviation and variance for beta continuous series. Is it clear what we will study today? How to find out standard deviation and variance for continuous series. 15.53 standard deviation of a continuous frequency distribution. What is the formula we will use? The formula we will use, that is mu is equal to, mu means standard deviation, 1 upon n sigma n I is equal to 1 fi into xi minus x bar. Clear beta? In this your n is equal to number of observations, f is frequency, these your xi, these are your observations, x bar is mean of the data, and how is n calculated? N is calculated by, or we can say that simply sigma f. Is it clear beta? There we can use one more formula also for this concept. This is the one formula which we will be using. One more, another formula is there, that is standard deviation mu is equal to 1 by n under root of n into sigma I is equal to 1 to n fi xi square minus sigma I is equal to 1 till n fi xi होल स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। बेटा इस चैप्टर में अंडर रूट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था। यू हैव टू लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड, ये आपको ज़रूर आना चाहिए टॉपिक, मैथ्स का टॉपिक है। 6th 7th 8th क्लास में आपको सिखाया गया था हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट using long division method। क्लियर बेटा? ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं, जो एग्जांपल्स वगैरह, उसका फाइनल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, फाइनल आंसर आपको नहीं मिलेगा। क्लियर बेटा?
एग्जाम्पल नंबर 10, कैलकुलेट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड deviation for the following distribution. Clear? What is the table? That is class 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. What is frequency, beta? Frequency is 3, 7, 12, 15, 8, 3 and 2. While solving the question, first of all we have to make this table once again in vertical form, that is class 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. Over here is beta frequency 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2. As you know the formula, we have to use that formula, that is mu is equal to under root of 1 by n sigma I is equal to 1 n fi into xi minus x bar होल स्क्वायर. क्लियर बेटा? इसका मतलब हमें इसकी मिड वैल्यू भी चाहिए, वो हम xi निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? L1 प्लस L2 अपॉन 2 करके. फिर बेटा हम मीन से इसको डेविएट करेंगे, जैसे मैंने कल भी आपको सिखाया था. फिर डेविएट करने के बाद हम इसका होल स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद बच्चे हम होल स्क्वायर करके उसका f से जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे. fi इंटू xi माइनस x बार होल स्क्वायर. क्लियर बेटा? लेट मी रेडी दिस टेबल so that we can fastly calculate the values. Clear beta? This my box is ready now. Just have a look. Thirty plus 40 by 2, 70 by 2 that is 35. ऐसे ही करके हम ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे. ये 45 आएगी, ये 55, ये 65, ये 75, ये 85 और ये 95. ऐसे करके निकालेंगे बच्चा. ठीक है? जैसे मैंने ये दिखाया, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया. अब हम अपना मीन निकालेंगे. व्हाट विल बी आवर मीन? मीन निकालना आता है सबको. मीन के लिए हमें क्या कर, fi xi का टेबल चाहिएगा, जो हमने यहाँ पर बनाया नहीं है.
क्लियर है? वी विल नीड वन मोर टेबल, सो लेट मी चेंज इट into FI/XI table. FI/XI, that is 3 into 35, 105, 7 into 45, 12 into 55, 15 into 65, 8 into 75, 3 into 85, 2 into 95। इनको हम करेंगे बच्चे, और जैसे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर्स आएंगे 315, 660, 975, 600, 255, 190। आप लोगों को पता ही है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा F। व्हाट इज सिग्मा F? यहाँ से निकालते हैं। 7 and 3 10, 10 and 2 12 and 5 17 and 8 25 and 3 28 and 2 30, 0 carry 3 1 and 4, so what is total? 50, 3 4 and 5, it is total 50 beta. But we will add these also, 105 plus 3 and 15 plus 660 plus 975 plus 600 plus 225 plus 190, that is sigma Fi into Xi, that will be 3100. When we will put the values in this formula, what we will get the value? This cancelled, 5 6 are 32 and 62 will be our mean. What will be our mean बच्चे? 62. Now when we will find these deviations, suppose this is our 35 minus 62 whole square, 45 minus 62 whole square, 55 minus 62 whole square, 65 minus 62 whole square, 75 minus 62 whole square, 85 minus 62 whole square, 95 माइनस 62 होल स्क्वायर। जो वैल्यूज इनका डिफरेंस करके आएंगे उनका हम होल स्क्वायर करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर मेरा फर्स्ट वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 729, नेक्स्ट वन विल बी 289 एंड नेक्स्ट वन विल बी 49, देन 9, देन बच्चे 169, आफ्टर दैट 529 and then बच्चे 1089. Then we will do the product of this column and this column, that is 3 multiply 7 to 9, 7 multiply 289, 12 multiply 49, 15 multiply 9, 8 multiply 169, 3 multiply by this, 2 multiply by 1089. Then we will get some answers. आप मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिख लेंगे। जस्ट आई एम राइटिंग डाउन द आंसर। द आंसर इज 2187, नेक्स्ट वन इज 2023, नेक्स्ट इज बच्चा 588 एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज 135, देन इज 1352, देन इज 1587 एंड देन इज योर 2178. We will do the total of this sigma Fi into Xi minus X bar whole square. When we will add these all values where I am putting the tick mark, we will add and we will get value 10,050. Then we will come to our formulas which we are knowing, and after putting in the formulas we will get the answers. First of all beta we will find out variance. What is variance? That is mu square. The formula is 1 by n sigma till 7 because the values are 1 2 3 4 5 6 and 7. ठीक है, n की वैल्यू 7 है यहाँ पर। इसके बाद बच्चे we will get Fi into Xi minus X bar whole square 1/7 into this value 10050,
After cutting, we will get the answer 201. Over here it will come 50 because n means sigma f. So this is our n, 50. This cancel 0 0 and after that we will get 201. Now this already we know. What is our mu value now? Mu value will be under root of mu square, that is under root of 201. म्यू निकालना मैंने आपको कल भी सिखाया था, इसको अंडर रूट कैसे करते हैं. फाइनल आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट 14.18. क्लियर बेटा? व्हेन वी विल कैलकुलेट वी विल गेट दिस आंसर. गॉट इट बेटा? देन इज योर एग्जाम्पल नंबर our chapter, that is the garbage in, garbage out, and we are 11. Example number 11. That is the ETQ question. Find the Essay type question. Standard So here is the first question. Deviation. The table is given xi and fi. The first part 3, 7, 8, 10, disposal. 13, 15. The responsibility 18, 10, of the government. 20 and 6. These are your frequencies given. Problems relating to disposal of garbage. Clear बच्चा? Firstly, we will write the answer of this garbage disposal. In this one beta, only of the government. you have to arrange this table. Means this garbage xi, fi, 3, is the 8, problem. 13, 18, 23, 7, 10, 15, 10, 6, and then you have to find fi and xi. Then you have to find xi square, and then beta you have to find out fi into xi square. 3 into 7, 21, 80. 13 into 15 will give you 195, 180, and then beta you will get 138. Now you will square these 3 3 ja 9, 8 8 ja 64, 13 square is 169, 18 square is 324 and 23 square is 529. अब बेटा हम इस वाले कॉलम को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 7 into 9 is 63. Then बेटा 10 into 64 is 640. Similarly you will get 2535, 3240, 3174. So this is the table which we have to frame for our this question. Over here we will need total values also for the garbage disposal. For the clear beta? Garbage disposal. While doing this we have to find few totals. We will total find of this value. Sigma fi is equal to 48. Over here sigma fi into xi will be 614, Of garbage and over here sigma fi xi square will be for disposal of 9652. Then we will put all the values in the formula. जो मैंने अभी इससे थोड़ी देर पहले आपको दो फॉर्मूलाज बताए थे, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पुट करेंगे. This formula we will use, and after putting the values in this we will get 1 by 48 under root of 4346 the government 3296 minus 376996, and after final calculations we will get this value. Every individual, and the calculations you can do from your side also. So this is our final answer, 6.12. Once again explain to you example number 10 and 11, and after that you have to complete your exercise 15.2 and you will try to do your example number 12. Hope I will tell you this example in next class also, but from my side your exercise 15.2 is completed.
Example number 10. Calculate mean, variance and standard deviation for the following distribution. Clear? What is the table? That is class 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, Do you think 90 it to is better to use 100. rows instead of n? What is frequency, beta? Frequency is 3, 7, 12, 15, 8, 3 and 2. While solving the question, first of all we have to make this table once again in vertical form, that is class 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. Over here is beta frequency 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2. As you know the formula, we have to use that formula, that is mu is equal to under root of 1 by n sigma I is equal to 1 n fi into xi minus x bar होल स्क्वायर. क्लियर बेटा? इसका मतलब हमें इसकी मिड वैल्यू भी चाहिए, वो हम xi निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? L1 प्लस L2 अपॉन 2 करके. फिर बेटा हम मीन से इसको डेविएट करेंगे, जैसे मैंने कल भी आपको सिखाया था. फिर डेविएट करने के बाद हम इसका होल स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद बच्चे हम होल स्क्वायर करके उसका f से जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे. fi इंटू xi माइनस x बार होल स्क्वायर. क्लियर बेटा? लेट मी रेडी दिस टेबल so that we can fastly calculate the values. Clear beta? This my box is ready now. Just have a look. Thirty plus 40 by 2, 70 by 2 that is 35. ऐसे ही करके हम ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे. ये 45 आएगी, ये 55, ये 65, ये 75, ये 85 और ये 95. ऐसे करके निकालेंगे बच्चा. ठीक है? जैसे मैंने ये दिखाया, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया. अब हम अपना मीन निकालेंगे. व्हाट विल बी आवर मीन? मीन निकालना आता है सबको. मीन के लिए हमें क्या कर fi xi का टेबल चाहिएगा, जो हमने यहाँ पर बनाया नहीं है
क्लियर है? वी विल नीड वन मोर टेबल, सो लेट मी चेंज इट into FI/XI table. FI/XI, that is 3 into 35, 105, 7 into 45, 12 into 55, 15 into 65, 8 into 75, 3 into 85, 2 into 95। इनको हम करेंगे बच्चे, और जैसे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर्स आएंगे 315, 660, 975, 600, 255, 190। आप लोगों को पता ही है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा F। व्हाट इज सिग्मा F? यहाँ से निकालते हैं। 7 and 3 10, 10 and 2 12 and 5 17 and 8 25 and 3 28 and 2 30, 0 carry 3 1 and 4, so what is total? 50, 3 4 and 5, it is total 50 beta. But we will add these also, 105 plus 3 and 15 plus 660 plus 975 plus 600 plus 225 plus 190, that is sigma Fi into Xi, that will be 3100. When we will put the values in this formula, what we will get the value? This cancelled, 5 6 is 32 and 62 will be our mean. What will be our mean बच्चे? 62. Now when we will find these deviations, suppose this is our 35 minus 62 whole square, 45 minus 62 whole square, 55 minus 62 whole square, 65 minus 62 whole square, 75 minus 62 whole square, 85 minus 62 whole square, 95 माइनस 62 होल स्क्वायर। जो वैल्यूज इनका डिफरेंस करके आएंगे उनका हम होल स्क्वायर करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर मेरा फर्स्ट वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 729, नेक्स्ट वन विल बी 289 एंड नेक्स्ट वन विल बी 49, देन 9, देन बच्चे 169, आफ्टर दैट 529 and then बच्चे 1089. Then we will do the product of this column and this column, that is 3 multiply 7 to 9, 7 multiply 289, 12 multiply 49, 15 multiply 9, 8 multiply 169, 3 multiply by this, 2 multiply by 1089. Then we will get some answers. आप मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिख लेंगे। जस्ट आई एम राइटिंग डाउन द आंसर। द आंसर इज 2187, नेक्स्ट वन इज 2023, नेक्स्ट इज बच्चा 588 एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज 135, देन इज 1352, देन इज 1587 एंड देन इज योर 2178. We will do the total of this sigma Fi into Xi minus X bar whole square. When we will add these all values where I am putting the tick mark, we will add and we will get value 10,050. Then we will come to our formulas which we are knowing, and after putting in the formulas we will get the answers. First of all beta we will find out variance. What is variance? That is mu square. The formula is 1 by n sigma till 7 because the values are 1 2 3 4 5 6 and 7. ठीक है, n की वैल्यू 7 है यहाँ पर। इसके बाद बच्चे we will get Fi into Xi minus X bar whole square, 1/7 into this value 10050,
After cutting, we will get the answer 201. Over here it will come 50 because n means sigma f. So this is our n, 50. This cancel 0 0 and after that we will get 201. Now this already we know. What is our mu value now? Mu value will be under root of mu square, that is under root of 201. म्यू निकालना मैंने आपको कल भी सिखाया था, इसको अंडर रूट कैसे करते हैं. फाइनल आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट 14.18. क्लियर बेटा? व्हेन वी विल कैलकुलेट वी विल गेट दिस आंसर. गॉट इट बेटा? Then is your example number. We will proceed our chapter, that is the garbage in, garbage out, and we are 11. Example number 11. That is the ETQ question. Find the Essay type question. standard So here is the first question. deviation. Yes. The table is given xi and fi. The first part 3, 7, 8, 10, disposal. 13, 15, The responsibility 18, 10, of the government. 20 and 6. These are your frequencies given. Problems relating to disposal of garbage. Clear बच्चा? Firstly, we will write the answer of this garbage disposal. In this one beta, only of the government. you have to arrange this table. Means this garbage xi, fi, 3, is the 8, problem 13, 18, 23, 7, 10, 15, 10, 6, and then you have to find fi and xi. Then you have to find xi square, and then beta you have to find out fi into xi square. 3 into 7, 21, 80. 13 into 15 will give you 195, 180, and then beta you will get 138. First answer. Now you will square these 3 3 ja 9, 8 8 ja 64, 13 square is 169, 18 square is 324 and 23 square is 529. अब बेटा हम इस वाले कॉलम को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 7 into 9 is 63. Then बेटा 10 into 64 is 640. Similarly you will get 2535, 3240, 3174. So this is the table which we have to frame for our this question. Over here we will need total values also. For the garbage disposal. For the Clear beta? garbage disposal. While doing this, we have to find few totals. We will total find of this value. Sigma fi is equal to 48. Over here sigma fi into xi will be 614, Of garbage. and over here sigma fi xi square will be For disposal of 9652. Then we will put all the values in the formula. जो मैंने अभी इससे थोड़ी देर पहले आपको दो फॉर्मूलाज बताए थे, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पुट करेंगे. of every This formula we will use, of and after putting the values in this citizen we will get and not 1 by 48 under root of of 4346 the government 3296 minus 376996, and after final calculations we will get this value, every individual and the calculations you can do from your side also. So this is our final answer, 6.12.